मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, ओ मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब। L'éducation et le chômage ont été les problèmes majeurs auxquels les musulmans ont dû faire face au sein d'un paysage national infiniment complexe. Sans l'éducation, aucune solution au problème du chômage n'était envisageable, tant ces deux notions étaient liées. Les musulmans qui occupaient les fonctions importantes au sein du gouvernement sont en très grand nombre partis pour le Pakistan, créant ainsi un vide pour des millions de musulmans moins privilégiés. La proposition qu'ils représentèrent dans des services secondaires comme la police diminua considérablement. Pire encore, les musulmans en tant que communauté développèrent un complexe d'infériorité qui résulte de la culpabilité des autres. Les madrasas et les maktab devinrent une seule institution impossible pour les musulmans alors que la migration de leur classe moyenne et de leur bourgeoisie créait un problème d'adaptation à la modernité. Des madrasas, le plus important satisfaisant aux critères de l'enseignement islamique supérieur, supportaient l'idéal nationaliste. Mais les procédés qu'ils utilisaient pour enseigner étaient principalement influencés par le monde arabe. Darul Uloom Deoband et Dadouatoum Uloom étaient les deux exemples les plus frappants. Leur programme d'enseignement, c'était sur la théologie, la logique ou encore la grammaire. Elles se mirent bien entendu à l'informatique, à la connaissance scientifique, mais bien plus tard. दारुल उलूम नदवतुल उलमा जिसकी इमारत में आप खड़े हैं, इसकी पहली बिल्डिंग जो है आपकी इस पुष्ट पे है। इसका क़याम तकरीबन 100 साल पहले हुआ। 1898 में इसकी बुनियाद रखी गई और हमारे उस ज़माने के मशहूर उलमा मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी, अल्लामा शिबली और इस तरह के मौलाना आज़ाद वगैरह इसमें शामिल हुए और उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस किया कि इस ज़माने में अंग्रेज़ी तालीम की भी ज़रूरत है और दीनी तालीमात के साथ उसको भी जोड़ा जाए। राजस्थान मदरसा बोर्ड ने पूरे राजस्थान में तालीमी बेदारी मुहिम चलाई हुई है। राजस्थान सरकार ये चाहती है जो मदरसे हैं, इन मदरसों में लड़के सिर्फ मजहबी तालीम पढ़ते हैं, अरबी तालीम उर्दू की तालीम पढ़ते हैं, आगे चल कर के उनके एडमिशन दूसरे बड़े स्कूलों में नहीं हो पाते। अब सरकार ने तय किया है कि इनमें मजहबी तालीम के साथ साथ मॉडर्न तालीम भी पढ़ाई जाए, जिससे अपने इम्तिहान दे कर के दूसरे क्लासों में जा कर के और वो सर्टिफिकेट लेकर के अपनी तालीम जारी रख सकें। L'université musulmane Ali-Bagh s'est inspirée du monde occidental et l'université Jamia Millia al-Islamia de Delhi représente la synthèse de deux systèmes éducatifs. Pourtant, ces deux structures s'est adressées pratiquement qu'à l'élite et il a fallu du temps pour qu'elles soient capables d'attirer des étudiants de classe moyenne inférieure. Il était évident que la transition était lente et douloureuse. I think the most important thing for any community, the Muslims included, to realize is that you cannot be put down or you cannot be made to look small unless you contribute to that process of deterioration or degeneration either by acts of commission or acts of omission. So if the Muslim in India is faring less well than he wants to or deserves to or needs to, then there is a large contribution that he and his community have made to that situation. And that situation has built up over a period of time. It hasn't happened in a decade or 5 years or 2 years. So the reversal of that situation will also happen only when the community realizes its potential
and works towards it and understands that the reversal is also going to take time. In a society where there are many hands on a small pie, you'll see lots of sections being deprived of their rights and their privileges. Le modèle d'enseignement musulman est divisible en deux courants. Les institutions modernes et les madrasas qui continuent à maintenir une méthode d'enseignement traditionnelle. जो लेकिन है हमारे हिंदुस्तान में अगर मुस्लिम के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन यहाँ प्रॉपर मिला नहीं है। उनकी जिम्मेदार कौन है? गवर्नमेंट नहीं है, हम खुद हैं। मेरे पास कुछ लोग आए बीच में कि लेट्स मेक ए, यू गिव सम डोनेशन, वी वांट टू मेक ए उर्दू स्कूल। आई सेड नथिंग डूइंग। आप इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए, हम आपके साथ हैं। बहुत मस्जिद हो गई, बहुत मदरसे हो गए, सिर्फ स्कूलें बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, पॉलीटेक्निकल स्कूल बनाओ, जिससे हम औरतों को, हमारी बहनों को पढ़ा सकें। और पहला एजुकेशन माँ होती है। What the Muslim community needs is more education and the advanced and modern education. All Muslims who have really gone through and studied as far as the advanced education is concerned, they made a place for themselves. But to come in the mainstream, to become great business people, to become great intellectuals, the great writers, and having at the present in the forefront, the new ideas, new thinking. I think the more my Muslim brothers read, the more big place they'll make for themselves. Muslim society is changing, but changing slowly. It's not adopting American style or some other style. The idea is that there's a section of Muslims who think that without education, without coming into the mainstream of life, they'll be left behind. So this awareness, is very important, but the progress is slow, I must say. Muslim community needs to concentrate more on education, but the thing is that the largest number of Muslims were craftsmen, and now that the crafts are dying, they will have to now look for education. En effet, il y avait un grand nombre d'artisans pour lesquels l'obtention d'un travail qualifié avait la priorité sur l'éducation formelle. Moradabad est connu pour ses objets en cuivre jaune, mais avec l'évolution de ces choses, les artisans concernés par cette industrie ont dû adopter une nouvelle organisation pour répondre à une forte demande. Ils s'adaptèrent aux besoins qu'implique le monde moderne et les objets en cuivre jaune de Moradabad ont évolué. Ils n'étaient plus uniquement confinés aux ustensiles de la vie quotidienne comme les assiettes ou le verre. Ceux qui s'engagèrent dans l'industrie s'orientèrent vers de nouveaux modèles de luxe basés sur la faune et la flore indienne. Ce sont principalement les musulmans qui se sont engagés dans cette activité. Ils se sont également mis à faire des symboles religieux hindous, mais cela ne convenait pas. Un marché porteur s'était déjà développé à l'intérieur du pays et devint particulièrement populaire lorsque les touristes étrangers s'intéressèrent également à ces objets. Des modèles innovants furent créés et produits en grand nombre. Vases, services à thé, cendriers, tout cela dans différentes couleurs, dessins et tailles. Les installations électriques en argile sont une spécialité. On peut prendre la mesure du développement de cette industrie et de son envie d'atteindre le marché à l'export en observant de nombreux fours de briques de la région, leurs cheminées portant l'inscription Bismillah ou encore la svastika parsemant le ciel de Kourja. यहाँ पे तकरीबन 550 पोटियाँ हैं जो रनिंग पोजीशन में हैं। इस वक्त यहाँ जो कारोबारी सिलसिला है, ये मिट्टी पत्थर से हम लोग यहाँ बर्तन, फ्लावर सेट, कटआउट्स वगैरह, इंसुलेटर वगैरह ये सब चीज़ें बनाते हैं और कुछ तादाद में, छोटी तादाद है वैसे वो, का एक्सपोर्ट भी करते हैं। वैसे यहाँ का जो पॉटीज़ का काम है वो बहुत पुराना है, तकरीबन 450-500 साल पुराना काम है। उसको हमने यहाँ मॉडिफिकेशन करके न्यू टेक्नोलॉजी से, उसके ज़रिए से इसको काफ़ी मॉडिफिकेट किया है
और आगे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरक्की करेंगे। Le verreries de Firozabad ont connu la même histoire. On y trouve le plus seulement de petits bracelets ou de churis produits par les usines de verre, mais également de verre à pied, fait du verre le plus pur et des chandeliers de bon goût. Ces derniers connaissant une popularité accrue tant au sein du marché domestique que sur le marché étranger. Ces articles sont fabriqués dans les maisons de Firozabad, ce qui représente du travail pour les femmes impliquées dans cette industrie. Cette situation est différente de celle que l'on peut trouver à Kourja ou à Moradabad, où l'industrie est dominée par les hommes. Il est intéressant de savoir que l'article de verre fabriqué à Firozabad est un composé fait à borax et de matériaux polis et parfumé plongé dans un four. Les femmes musulmanes se livrent à la fabrication de rakis et de sari à Old Delhi, dans des unités de production utilisant la technique de broderie appelée Zardozi. Mohamed Fazal manifeste sa gratitude aux musulmans impliqués dans la production de broderies sur soie Zari à Surat, à la dextérité dont les artisans de Varanasi font preuve et aux broderies Zardozi ou Shikan. My own most number of shops closed, or now all the mark mail. By one of the and all made by others in the month Kota saris, Chanderi saris, or Zari work in. Is done by Muslims. L'industrie de cigarettes à Jabalpur, dans Malta, également partenaire d'activité. Le mécanicien musulman et de nombreux endroits comme Uttar à l'ouest. Cette activité doit être organisée et à un modèle de personnel. A été leur point fort, ils ont le potentiel une résultante de talent et de savoir-faire. L'artisan n'est plus la profession du pauvre ou du démuni. Cette activité a prospéré après l'indépendance, créant une classe plus aisée. Ce sera néanmoins trop d'avance que de dire que l'artisan permet à ceux qui en ont pas de moyens de poursuivre les études supérieures. Dans le même temps, les institutions d'enseignement supérieur appartiennent à un genre différent. Le centre de recherche sur les communications de masse de l'université Jamia Millia s'est développé jusqu'à devenir une institution de renommée internationale. Construit en collaboration avec le Canada, ces diplômés deviennent souvent cadres aux États-Unis, en Europe ou ailleurs. Ce centre a marqué une rupture par rapport à la traduction en ce qui concerne l'équipement, le programme, le recrutement ou encore les critères d'admission. You see, a large number of people that you find today in electronic media have been the products of Jamia, and some of them have achieved certain eminence. I would like to mention the name of persons like Barkha Dutt or Fuad Khan, who is working for many of the films. So this is a very unique course, a very coveted, prestigious course, but we don't want to rest on our laurels. So about 2 years ago, we started another course with the support of Ford Foundation. That is development communication. Ce qui est remarquable au sujet de l'évolution du système éducatif musulman dans les disciplines modernes est l'aide active du gouvernement pour permettre à la communauté musulmane de sortir de son sentiment premier de désespoir, d'isolement et de manque de confiance. Les musulmans indiens ont fait en sorte d'avoir à nouveau des raisons d'espérer et leur théorie selon laquelle ils ne font pas partie du courant dominant de la communauté nationale ne tient plus la route. As far as North India is concerned, culturally Muslims were the mainstream, and then the Hindus have taken a century to come into the mainstream.
And the rest of India, Bengal, South India, yes, the Muslims had to come into the mainstream, and they have. I mean, Muslims in Kerala and Tamil Nadu, Bengal are part of the mainstream. It's only in North India that the Hindus have had to come into the mainstream. It is there in their souls, an artisan, a weaver, a craftsman, a boatman, I don't know, a garage mechanic, because by and large 5% of Muslims are in the unorganized sector now. It's a tragedy, and it reflects. Simultaneously, education, critically important. I think in these times it's critically important to be educated. So in that comes another crisis. Now, is it valid to get a job if you're not educated? I don't know. You've got to be educated. So this is a balancing thing which has to occur simultaneously. They are in the mainstream. Some circumstantially, they are in the backward areas. So you think that they're not in the mainstream. But circumstantially, people who are rich and people who have the means, people who are achievers and they are all already in the mainstream. Actually, the mainstream is a very much misused and misunderstood phrase, because nobody has defined what is mainstream. Is it the membership of Gymkhana Club in Delhi? Is it the membership of cricket team of India? Is it a membership of the parliament? Is it a membership of the education community? So it's a very ill-defined phrase. There is a myth now. I always find it very hard to understand. I can't understand this. That constantly it has been said that they are not a part of the mainstream. Why are they not part of the mainstream? If you go to a village, they are the one who behave like farmers. They are tilling the lands. They have all the things that another human being is doing it. So I suppose in that respect that they are struggling to survive daily, they are a part of the mainstream. Why this question at all arises that they are not a part of the mainstream is one difficult one to answer to me. Une autre étape importante de l'évolution de l'éducation musulmane a été la création de l'université Hamdar à New Delhi. Au moment où la communauté était abandonnée par ses propres parents et amis qui migraient vers le Pakistan, Hakim Abdul Hamid est parti dans un endroit reculé près de tout l'Aghabad. Cette décision prouve à quel point son sens de l'optimisme et son courage sont innés, mais souligne également sa profonde croyance à une destinée positive pour les musulmans indiens à l'Inde. Hakim Sahib, connu plus par ce nom, a construit sa réussite à partir du début modeste avec la Unani Dawakan à Old Delhi. Il a construit cette institution brique par brique et a fait en sorte qu'elle s'étende de la vieille ville fortifiée vers les espaces libres et tendancieux de New Delhi. Son but était de mettre en place une université de médecine à part entière qui utilise les techniques de soins Unani, système de soins particulier. Jamia Hamdar is the interface between the scientific students which are coming from upper strata and also to those which are coming from the poor background, like Muslim background. And we are offering courses like nursing, like pharmacy and allied health sciences. So this is giving a new, and we have reduced the fees also. And here the higher education, in such a scenario, it is considered a non-profitable business or non-profitable thing. Le cycle d'études de la Hamdar suit un schéma innovant qui permet de former les étudiants à des examens où la concurrence est forte. Certains élèves ayant suivi des préparations aux examens pour rentrer dans les administrations ou dans les services d'État ont montré des résultats très encourageants. Certains d'entre eux ont réussi d'obtenir des emplois bien placés dans les hiérarchies. Hamdar Study Circle was founded with a view to providing help to those students from weaker sections, particularly Muslims, who cannot afford to pay exorbitant fees in the commercial institutes which charge very high fees. And in order to provide a level playing field for all these people, Hakim Saab thought that he should have a facility for these people who can come here, study here, get a good hostel facility. So he thought of establishing this study circle. L'éducation a été une passion pour de nombreuses autres personnes dominantes. Saïdid Adib, diplômé de l'université musulmane à Aligarh,
a été nommé vice-président de cette université après sa démission des services administratifs indiens. Il est à présent président de l'université d'Amdar. C'est une personne tournée vers l'avenir qui a été choisie par Hakim Abdul Hamid afin de rassembler ces institutions dispersées et de les faire fonctionner ensemble. C'est ainsi qu'a pris forme l'idée de créer une école publique à Amdar près de Sangamviar. C'est une école publique avec une différence notable. En effet, ces cibles de classe sociale la plus faible de la société ne peuvent pas payer les droits d'inscription élevés des autres institutions d'élite. Les projets principaux des institutions Hamad et les combinés modernité et tradition. Hakim Saab had the unique quality of dreaming and taking practical steps for realizing his dream. And it was at a time when there was madness relating partition on either side of the border, and when people from the minority community were fleeing this place, his vision was that Indians should progress together, and if any section of the Indian population remains backward, it affects the overall performance and progress of the entire nation. Janab Syed Hamid Saab is very particular that children should speak in English. For that we have set up a language lab, which is a very, very rare facility for the schools. We will be finding only in university this sort of lab. And we give training in English. The children, they speak in English very well. And our medium of instruction is also English. And it is compulsory for all the teachers as well as for the students to speak in English. In respect of the school, it's open to all communities. There is a subject, Islamiyat, knowledge about Islam, which is a part of the curriculum. And its Muslim students take up Islamiyat, and non-Muslim students take up value education instead. The Muslim community, they have a lot of potential. I feel it is not tapped yet. And we are trying our best to do that. We encourage the children. We wanted these children to come up. I have noticed a spark in these children. Only thing is that they are not focused. And for that, they need people to guide them and tell them that this is what they require. And you go this way, and then leaving all these irrelevant petty matters aside, and then come forward and they can do excellent work. Au sujet de la tradition, on ne peut ou ne pas parler de la multitude d'orphelinats et d'institutions d'aide sociale que les musulmans ont mis en place pour les enfants pauvres. L'une de ces institutions est Bako Kagar, située à Daryaganj, Delhi, qui dispose l'infrastructure pour enseigner aux enfants nécessiteux. C'est une institution charitable qui essaie de protéger et de donner une nouvelle chance aux enfants déracinés en général et aux orphelins en particulier. मैं सन 1995 में यहाँ आया था जब मेरी उम्र 6 साल थी। यहाँ हमें हर तरह की तालीम दी जाती है, हमें स्कूल भी भेजा जाता है। मगरिब के बाद यहाँ हमें दीनी तालीम भी दी जाती है और इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, ट्यूशन दिया जाता है यहाँ इंग्लिश और मैथ का। बच्चों को एडमिशन करने से पहले उनकी एप्लीकेशन ली जाती हैं। एप्लीकेशन में हम ये देखते हैं कि उस बच्चे के बाप की क्या पोजीशन है। बाप अगर नहीं है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट हमें ज़रूरी होता है। 6 साल से ऊपर से लेकर 8 साल तक के बच्चे को हम लेते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त जो है 100 से ऊपर बच्चे हैं। इसमें जो है हमारे यहाँ लड़कियाँ अलग हैं, लड़कियाँ हमारी दूसरी जगह हैं, उनको सेपरेट रखा हुआ है। इसकी इनकम का ये है कि कुछ हमें ग्रांट मिलती है कारपोरेशन से, बाकी हमारे यहाँ डोनेशन आता है, ज़कात खराज जो है, जो रमज़ान के महीने में हमारे यहाँ ज़कात आती है वो लोग जो है वो देते हैं। दर्द मन